अटैक्सिया में फ्रेडरिक अटैक्सिया जो है न्यूरोलॉजी, द मोस्ट कॉमन अर्ली ऑनसेट रहता है, मोस्ट कॉमन अटैक्सिया है अर्ली ऑनसेट हेरिडिटरी ऑटोसोमल रेसेसिव इन 10 to 15 years old बॉयज़ और फीमेल, मोस्टली बॉयज़ का ही। तो दिस इज़ ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट, इसमें GAA रिपीट होता है इन 25X25 जीन। No anticipation is seen in this. There will be gait ataxia, kyphoscoliosis, absent ankle reflex and extensor plantar, cerebellar ataxia होता है, optic atrophy और spinocerebellar ataxia होता है। Most common cause of death HOCM 90% ataxia में, diabetes mellitus 10 to 20% एंड high arched palate होगा। अभी हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटल स्टेनोसिस एंड न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। तो माइटल स्टेनोसिस में और न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका दोनों में ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा एंड अक्यूट माइलाइटिस, एंड दीज आर द एब्सोल्यूट क्राइटेरिया इवन फॉर डायग्नोसिंग न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। सपोर्टिव क्राइटेरिया फॉर दिस इज ब्रेन MRI नॉट मीटिंग क्राइटेरिया फॉर MS, स्पाइनल कॉर्ड MRI विथ contiguous T2 एंड NMO इम्यूनोग्लोबुलिन G पॉजिटिव। अगर ये रहेगा तो ये न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका है। Then multiple sclerosis. Now this is basically demyelination of the central nervous system, and therefore you will see upper motor neuron signs. So everything will go up. There will be non-specific clinical feature and lethargy. Diagnosis कैसे करेंगे? अगर more than or equal to 2 relapses or more than or equal to 2 lesions in 2 years, then you will diagnose multiple sclerosis. So what are the features? Visual features are the most one. Optic neuritis most common, pain होगा इसमें. Optic atrophy, Uthoff's phenomena, मतलब the vision will decrease on increasing the body temperature, and internal nuclear ophthalmoplegia. Sensory में pins and needles and numbness will be there. There will be trigeminal neuralgia, Lermit syndrome हो सकता है, like paresthesia in the limbs or neck flexion. मोटर में स्पास्टिक वीकनेस मोस्ट कॉमनली सीन इन द लेग्स, सेरेबेलर में अटैक्सिया एंड ट्रेमर, यूरिनरी इनकंटिनेंस, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इंटेलेक्चुअल डिटेरियोरेशन. सो यूरिनरी इनकंटिनेंस, MS पेशेंट्स विथ रिकरेंट UTI गेट अ यूरिनरी इन्फेक्शन, ठीक है. सेक्सुअल डिस्फंक्शन ठीक है. ट्रीटमेंट अगर अक्यूट रिलैप्स है तो हाई डोज ओरल या IV मेथिलप्रेडनिसोलोन दो 5 डेज़ के लिए. फिर आप देख सकते हो डिजीज़ मॉडिफाइंग ARDs DMRD, तो उसमें रिलैप्सिंग रेमिटिंग डिजीज़ है और उसमें 2 रिलैप्सेस हैं 2 साल में, एंड द पेशेंट इज़ एबल टू वॉक 100 मीटर अनएडेड. या फिर इसके सेकेंडरी प्रोग्नोसिस डिजीज़ है विथ 2 रिलैप्सेस इन 2 years एंड एबल टू वॉक 10 मीटर अनएडेड और एडेड. सो इन दिस केस विल गिव DMRDs. इसमें नटालिज्यूमाब देते हैं विच इज़ IV. ये एंटागोनिस्ट ऑफ अल्फा एंड 4β1 इंटेग्रिन है ऑन द सेल सर्फेस ऑफ द ल्यूकोसाइट्स. So this will inhibit the migration of WBC across the endothelium in the blood-brain barrier. ओक्रेलिजुमाब जो है anti-CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये भी IV देते हैं. फिंगोलिमेड, दिस इज ओरल. दिस इज पिंगोसिन 1-phosphate S100, moderately prevent lymphocyte from leaving. Beta interferon subcutaneous IM not as effective. Glatiramer acetate immunomodulator drugs subcutaneous less effective. Specific जो है fatigue, अमेंटाडीन एक्सक्लूड. अगर स्पेसिफिक दे रहा है मतलब फटीक के लिए यू कैन गिव अमेंटाडीन एंड यू हैव टू एक्सक्लूड एनीमिया, थायराइड एंड डिप्रेशन बिफोर गिविंग फॉर MS. स्पास्टिसिटी बैक्लोफेन या गाबापेंटिन चलेगा. ब्लैडर डिसफंक्शन अगर है तो सोनोग्राफी कर लो, एंड एंटीकोलिनर्जिक विल वर्सन द सिम्टम्स इन दिस केस. सो सिग्निफिकेंट रेसिड्यूल वॉल्यूम अगर है तो इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा. अगर कोई नॉन सिग्निफिकेंट है तो एंटीकोलिनर्जिक में इम्प्रूव द यूरिनरी फ्रीक्वेंसीज. ऑसिलोप्सिया गाबापेंटिन, ठीक है. प्रोग्नोसिस गुड इफ़ द पेशेंट इज़
फीमेल, यंग, रिलैप्सिंग, रेमिटिंग डिजीज, सेंसरी सिम्टम्स हैं, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन टू रिलैप्सेस, दे विल कंप्लीट रिकवरी बिटवीन टू रिलैप्सेस, देन द प्रोग्नोसिस इज गुड. देन MRI अगर आप करते हो, फ्लेयर MRI फॉर MS and stir MRI for thyroid disease. Flare for MS and stir for thyroid disease. Now we are coming for aphasia. Aphasia language pathways होते हैं. Spoken जो रहता है वो auditory parietal में जाएगा. Written या sign language जो रहती है वो occipital visual cortex में जाएगा. तो ये दोनों मिलके दे कम एंड कम्बाइंड वर्निकेज एरिया में लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन होता है. दे विल फ्रॉम देयर विल गो थ्रू द आर्किड फाइब्रस, वहाँ पे ब्रोकाज एरिया स्पीच प्रोडक्शन एंड देन मोटर कॉन्टेक्स होगा. नाउ इसमें साउंड ऑफ वर्ड विद लुक एंड फील ऑफ ऑब्जेक्ट की फीडर पैराइटल लोब एंड दिस इज जेक्विन्स टेरिटरी. So we'll see how to diagnose aphasia later. First we'll see how to diagnose these territories which are very important. Middle cerebral artery, anterior cerebral artery. Anterior cerebral artery का डिफेक्ट होगा या स्ट्रोक है, इन्फेक्शन, तो उसमें हेमीपैरेसिस एंड सेंसरी लॉस होता है. ये दो चीज़ें होती हैं कॉन्ट्रालैटरली जहाँ साइट होगा. तो इसमें लोअर लिम्ब मोर देन अपर लिम्ब. अगर होमोनिमस हेमिएनोपिया है एंड ओफेजिया है इसके साथ एंड अपर लिम्ब मोर देन लोअर लिम्ब, तो ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है. तो यू हैव टू चेक फॉर दीज टू थिंग्स. फर्स्ट यू विल चेक फॉर होमोनिमस हेमिएनोपिया एंड ओफेजिया. If the patient has got sudden onset vertigo, vomiting, dysphagia, if there is ipsilateral facial pain, temperature loss, and contralateral limb pain and temperature loss, along with ataxia and nystagmus. So this is pica, lateral medullary syndrome or Wallenberg syndrome. Along with this, if the limb pain and temperature loss and ataxia and nystagmus is ipsilateral with deafness, if deafness is added, then it is anterior inferior cerebral artery. अगर posterior cerebral artery infected है तो उसमें homonymous hemianopia with macular sparing होगा. Why? Because occipital cortex will go and there will be visual agnosia. So the patient will not be able to understand what is written because written part is going to the occipital cortex. Weber syndrome या फिर branch of posterior cerebral artery supplying the midbrain. तो अगर ये पार्ट जा रहा है तो इप्सिलैटरल यहाँ पे द ओनली थिंग विच इज़ इप्सिलैटरल आउट हियर अपार्ट फ्रॉम द पाइका का इप्सिलैटरल फेशियल नर्व एंड ऑल दैट, इसमें क्रेनियल नर्व 3 इन्वॉल्व है. ठीक है. एंड कॉन्ट्रालैटरल वीकनेस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी इज वेबर्स सिंड्रोम. सो 3 इज इन्वॉल्व एंड वेबर्स रहेगी. बेसिलर आर्टरी लॉकटन सिंड्रोम बोलते हैं इसे. Now other important MCQs, medication overuse headache. अगर सिंपल एनाल्जेसिया ट्रिप्टान है तो स्टॉप अब्रप्टली, अगर ओपियोइड रहेगा तो ग्रेजुअली. CSF में अगर इंक्रीज इन द प्रोटीन है देन व्हाट आर द कॉजेज? देयर विल बी GBS, Guillain-Barré, TB, फंगल बैक्टीरियमिया, फ्रॉइन सिंड्रोम एंड वायरल एनसेफेलाइटिस. देन ब्रेन एब्सिस, IV 3rd generation cephalosporin विथ मेट्रोनिडाजोल देना है. Restless leg syndrome, roperidol, which is a dopamine agonist. Degenerative cervical myelopathy, ये पता है आगे दिया. NMS, neuromuscular NMS में typically it is seen in patient who have just started the treatment. ठीक है. और इसमें क्या होगा? fever, muscle rigidity, delirium and confusion. FMDC. तो इसमें with hypertension, tachycardia and tachypnea. Here you will give DB, dantrolene and bromocriptine, which is a dopamine agonist, which is a Parkinsonism drug. Myoclonus is the distinguishing feature of serotonin syndrome. So if you find myoclonus, it will be specifically serotonin. Absent seizures may be provoked by hyperventilation. So drug of choice is ethosuximide in adults as well as children. 90 to 95% patient will be सीजर फ्री बाय अडल्टहुड. एक्सटेंसर प्लांटर्स है और एब्सेंट एंकल जर्क. तो इसमें मतलब मिक्स्ड UMN एंड LMN किस में दिखेगा? SCID, सब सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, मोटर न्यूरॉन डिजीजेस वेरी फेमसली,
Friedreich's ataxia, syringomyelia, taboparesis, and conus medullaris. So learn the symptoms. Severe combined SCID, severe combined motor neuron, fried, syringe, table, conus. So just remember these. How will you remember? Severe combined, severe comb, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, मोटर, फ्राइड, syringe, टेबल, cone, ठीक है. So how will you remember your? So there is a motor, ठीक है, and on that there is a conical table. There is a table which has got a samosa which is fried, conical samosa which is fried. On that there is a syringe of chutney, ठीक है, and there is a comb here. Motor on table, syringe, chutney, fried samosa. SC मतलब सुप्रीम कोर्ट. So Supreme Court में there is a motor which has got a table. On that there is a triangular conical samosa with a syringe inserted in which there is chutney. ठीक है. So how will you remember? This is mixed. There are good people, upper and lower lawyers. Mixed upper and lower lawyers in the Supreme Court. So how will you remember? Mixed, extensor plantar and absent ankle jog. Mixed upper and lower lawyers are there in the Supreme Court. Supreme Court, SCID, motor neuron disease, conus medullaris, taboparesis, that is syphilis, syringomyelia, Friedreich's ataxia. ठीक है. Differential diagnosis of vertigo, posterior circulation, stroke, trauma, multiple sclerosis. PTM. What are the differential diagnosis of vertigo? PTM का बिल देख के चक्कर आए. तो फर्स्ट तो अपना BPPV है, दूसरा posterior circulation of stroke, to trauma and multiple sclerosis. मीनियस डिजीज में क्या होता है? दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो आएगा इसमें. रॉरिंग सेंसेशन, वर्टिगो, टिनिटस, SNHL रहता है, निस्टैग्मस एंड रोम्बर्ग साइन. मिनिमम 2 hours, मिनट्स टू आवर्स में रहेगा ये. तो रोरिंग सेंसेशन, वर्टिगो, टिनिटस, SNHL, निस्टैग्मस, रोम्बर्ग साइन. ब्रेन एब्सेस मोस्टली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या ईयर इन्फेक्शन की हिस्ट्री. नाउ देयर इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया. इसमें थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्राक्सोन या फिर मेट्रोनोडाजोल देंगे. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रीनियल प्रेशर, नोशिया, पैपिलोडिमा एंड सीजर्स. ठीक है, नोशिया, पैपिलोडिमा एंड सीजर्स. ओबेस यंग फीमेल हेडेक, पैपिलोडिमा, इंट्राक्रीनियल, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हेमोरेज या फिर PTC, 6 nerve palsy, I don't know what is this. HCV एंसेफेलाइटिस. ठीक है, inferior frontal या temporal lobe. फोकल क्लिनिकल फीचर्स होंगे ओफेजिया. पेरिफेरल लीजन्स, नो रिलेशन टू HCV एंसेफेलाइटिस. CSF में लिम्फोसाइट दिखेगा, इंक्रीज प्रोटीन. PCR करेंगे HCV के लिए. CT में पेटिकल हिमोरेज. EEG करेंगे तो लैटरलाइज्ड पीरियोडिक डिस्चार्ज एट 2 hertz. IV असाइक्लोवेर देंगे. टेम्पोरल लोब में अगर रिंग एनहेंसिंग लीजन है तो दैट इज ब्रेन एब्सेस, एंड पेटिकल हिमोरेजेस है तो HCV. ठीक है, डोंट गो बाय टेम्पोरल लोब. फेशियल नर्व पाल्सी, अगर फोरहेड इज स्पेयर्ड देन इट इज UMN एंड द लाइकली कॉज इज स्ट्रोक. If it is involved in LMN, most common causes Bell's palsy and prednisolone only should be given.
ब्रेन लीजन, हियरिंग हेनरी बॉल, ठीक है, हेमी बॉल, सब थैलामिक, हाफ बॉल, न्यूक्लियस, काउडेट न्यूक्लियस, हंटिंगटन, यू हंट अ काउ, ठीक है, हंट अ काउडा दैट इज हॉर्स, कोरिया स्ट्राटम ऑफ द हंटिंगटन कोरिया स्ट्राटम ऑफ द बीजी में काउडेज रहता है, फ्रंटल लोब इनएबिलिटी टू जनरेट अ लिस्ट, कॉन्ट्रालैटरल अपर एंड लोअर वीकनेस, सेरेब्रल रीजन में कॉन्ट्रालैटरल होगा, अपर एंड लोअर लिव एंड फेशियल वीकनेस होगा, पॉन्स में अगर अफेक्टेड है तो कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब वीकनेस होगा, above the level of decussation of the corticospinal tract. तो facial muscle motor nucleus ipsilateral facial muscles will be affected. तो ऐसे it will be like this opposite, ठीक है, above the level. Paranoid syndrome, now this is a dorsal midbrain lesion, ठीक है, rostral interstitial nucleus of the medial longitudinal fasciculus. This dorsal midbrain control vertical gaze, तो vertical gaze is affected. तो पैरानॉइड में क्या होता है, अपवर्ड गेट पाल्सी होती है, सूडो अर्गाइजल, pupils don't constrict on light, कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैग्मस होगा, Alexia without agraphia, degenerate syndrome, lesion in the corpus callosum. Alexia मतलब unability to read, without agraphia inability to write. The patient can write but cannot read. So this is seen in degenerate syndrome, lesion in the corpus callosum. Then hypertrophic olivary degeneration, palatal myoclonus होता है इसमें ना change of the Gillian and Moller triangle of Gillian and Mollaret, inferior olivary nucleus, red nucleus and contralateral dentate nucleus, ये तीनों के बीच में ये लेजन होगा, palatal myoclonus. कोरिया एंड पर्सनैलिटी चेंजेस, ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं, कोरिया एंड पर्सनैलिटी चेंजेस मतलब ब्रेन गया है, तो लिवर डिजीज़ अगर है तो विल्सन्स है, अगर नो लिवर डिजीज़ देन इट इज़ हंटिंगटन्स कोरिया, because both will have chorea and personality changes. Now hemochromatosis does not cause chorea. Sporadic Creutzfeldt rapid onset dementia with myoclonus. Japanese encephalitis I've written somewhere. So ataxia can be infantile. If it is no immune deficiency, then it is Friedreich's ataxia. If it is childhood and there is immunodeficiency, then it is ataxia telangiectasia. Degenerative cervical myelopathy, all patients should be referred to orthopedic surgeon for neurosurgery, and there will be decompressive surgery, only effective treatment, early treatment within the 6 month. So Hoffman sign, cervical scan radiography cannot diagnose it, MRI of the cervical spine is the gold standard test. DCM, degenerative lower limb stiffness and imbalance, Gouda equina syndrome में leg weakness, saddle anesthesia and sphincter disturbances are there. Now clump case paralysis में T1 nerve root damages are there, loss of intrinsic hand muscles due to traction, ठीक है, TNMDA, peripheral neurosystem associated with ovarian teratoma, Afro-Caribbean patients. Acute disseminated encephalomyelitis, post infection encephalomyelitis, MMR या फिर varicella, multiple neuro symptoms, headache, fever, nausea, vomiting, motor and sensory, brainstem affected, supra and inferior tentorium demyelination, treatment IV glucose and IV immunoglobulin पहले कह देंगे. HCA encephalitis वायरल रहता है, पेटिकुलर हेमोरेज IV असाइक्लोविर. DVLA group 1 cans and group 2 cannot drive for less than or equal to 1 month, is stroke and TIA 1, no DVLA, no need to inform. Single episode explained and treated syncope, multiple TIA over short period अगर रहेगा तो, then you cannot drive for 3 months. Cannot drive for 6 months, transpenoidal surgery, unexplained syncope, first seizure अगर है तो. Epilepsy
Driving license free from seizure 12 months. 70s DL free from seizure 5 years plus or minus treatment. Narcolepsy and catalepsy cease driving on diagnosis. Cannot drive for 12 months more than or equal to 2 syncope or craniotomy. Spinal cord lesions. Spinal cord lesions में spastic is lateral corticospinal tract if it is affected, and dorsal spinal tract affected है तो proprioception and vibration is gone, and these will be ipsilateral. स्पाइनोथैलेमिक के इफेक्ट्स जो रहेंगे वो कॉन्ट्रालैटरल रहेंगे एंड पेन एंड टेम्परेचर विल बी गॉन. नाउ GBS lump region, transverse myelitis, spastic leg infection, viral HIV and all. विजुअल फील्ड इफेक्ट्स जो है अगर इनकॉन्ग्रेस है तो ऑप्टिक ट्रैक्ट्स आर अफेक्टेड. इफ दे आर कॉन्ग्रेस दैट मीन्स ऑन द सेम साइड बोथ हैं, then this is optic radiation or optic cortex. Now to differentiate between them, in cortex there will be macula sparing. Now middle cerebral artery, upper limb more than lower limb, contralateral homonymous hemianopia and aphasia. Wolf Parkinson white, wolf is white, so white QRS complex. Transient loss of vision described as a curtain descending ophthalmic artery infection involved. Thrombolysis plus thrombectomy within 4.5 hours करना है. Alexia is inability to read without agraphia, inability to write, infarction of the left posterior cerebral artery, and this is splenium of the corpus callosum and left visual cortex, occipital cortex. Motor neuron disease. Now this is unknown cause. There will be both UMN and LMN feature and mostly more than 40 years. Clinical features में fasciculations होंगे. Fasciculation देखते ही that should be MND. Absence of sensory or symptoms, UMN and LMN. Wasting of the small hand muscles, tibialis anterior is most commonly affected. That doesn't affect the external ocular muscle. No cerebellar signs. Abdominal reflexes are preserved. Sphincter dysfunction is a very late feature. Diagnosis clinical होता है. Nerve conduction study normally to exclude neuropathy. Decrease action potential and increase amplitude. ठीक है. MRI will exclude differential diagnosis. Action potential will decrease, amplitude will increase. Transient global amnesia and transient epileptic amnesia. So global amnesia lasts few hours, that is less than 24 hours. Epileptic amnesia will last for 1 hour, less than 1 hour. There will be anterograde or retrograde, no cognitive neurological symptoms, and in both cases repetitive questioning can occur. Motor automatism, rubbing hands together वगैरह होगा इसमें. Lamotrigine treatment or levetiracetam, focal seizure, male pattern. Sodium, male pattern blindness. Tonic, atonic seizure, myoclonic seizure, generalized tonic-clonic seizure में drug of choice है. HIV neurology, HIV dementia, chronic confusion, depression, behavior, psychosis, speech and balance, muscle weakness. Cryptococcus meningitis, headache, fever. PML प्रोग्रेसिव एनी CD4 पे आ सकता है. अटैक्सिया इसमें अटैक्सिया होगा. बिहेवियर फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स विल बी देयर फॉर मंथ्स, पैरासिस एंड इवेंचुअली कोमा. टॉक्सोप्लाज्मा में देयर विल बी सीजर्स, फीवर, हेडेक एंड सीजर्स. स्टेटस एपिलेप्टिकस more than or equal to 5 minutes, convulsive side effect, community buccal midazolam or rectal diazepam. हॉस्पिटल IV करना है लोराज़ेपाम, ये तो आपको पता है. चाइल्डहुड एपिलेप्सी benign, रोलैंडिक एपिलेप्सी 4 to 12 years occurs at night, partial seizures, EEG में centrotemporal spikes. Prognosis is okay. Anti-seizure medication which exacerbates seizure in patient with absent seizure, myoclonic seizure, juvenile myoclonic epilepsy या फिर ड्रावेट सिंड्रोम एंड लेनोजेस्टोर. तो इसमें कार्बामेज़ेपिन है और गाबापेंटीन है, phenobarbital, pregabalin, tiagabalin, lamotrigine. All this will
exacerbate these. Typical epilepsy history: man loses conscious, falls, stiffness, bites tongue, GTCS. Epilepsy, depigmented skin, roughened patches, tuberculosis. Epilepsy contraindicated bupropion. Woman suddenly has sensation of smelling roses, focal aware seizures. Jerky movement while falling asleep, morning, worse in stress, alcoholic, drop things, myoclonic seizures. All anti-epileptics are safe in breastfeeding. Epilepsy with pregnancy, you have to give 5 milligram folic acids. Focal seizures, अगर temporal है with or without consciousness, then aura will be there, deja vu, jamaisu, hallucination, auditory and gustatory, olfactory, sudden smelling of rose will be there. 1 minute ka automatism like lip smacking, grabbing, plucking will be there in Templo. Frontal में head and leg movement, posturing, postictal weakness and Jacksonius ma. Parietal paresthesias will be there. Occipital visual floaters and flashes will be there. Autonomic neuropathy. Now this heart rate is decrease on deep breathing. Postural hypertension is there, decreases by 30 in systolic and 15 in diastolic. Impotence, inability to sweat. Pupils will dilate following adrenaline instillation. So this is autonomic neuropathy. Diabetic mellitus is the most important. GBS, multisystem atrophy like Shire-Dagger syndrome. Parkinson's, infection like HIV, Chagas, neurosyphilis, antihypertensive drug, tricyclics and craniopharyngioma. अभी nystagmus जो है upward dilating cerebellar vermis, downward is Arnold Chiari. ठीक है, downward is Arnold Chiari. Spinal cord lesions, combined motor and sensory lesions. So spastic decreases and spastic lesion, upper limb, unilateral, proprioception and vibration senses gone in brown sequence. तो इसमें lateral cortico spinal tract, dorsal column and LST, that is spinothalamic. ठीक है. Ipsilateral, lateral cornicospine and dorsal column अगर जा रहा है तो वो bilateral lesion, मतलब जिस साइड का जो है SCID फ्रेडरिक्स अटैक्सिया, इसमें आपका LCS गया, DC गया एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रेडरिक्स इंटेंशन ट्रेमर दिखेंगे. Bilateral LCS and LSTT, left-sided. Spinal cord limb ataxia, increase in the spinothalamic, contralateral, PT, bilateral syringomyelia, LCS, ventral horns, flaccid paresis, intrinsic muscle of the hand is gone, syringomycin. Contralateral MS, asymmetric varying MN plus, what is it written? प्योर मोटर जो रहेगा ये मिक्स्ड है, मोटर एंड सेंसरी लेशन दोनों जाते हैं. प्योर मोटर इज ALS, UMN एंड LMN. पोलियो इज LMN. प्योर सेंसरी इज न्यूरोसिफिलिस, इसमें डॉर्सल कॉलम साइंस होंगे सिर्फ. सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, बायलैटरल मोटर. एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, मोटर, proprioception and temperature. Proprioception is spared. Then posterior column, proprioception is gone. Chorda equina, bowel and bladder with saddle anesthesia. Okay. Normal pressure, hydrocephalus and progressive supra. तो नॉर्मल प्रेशर में हेड इंजरी हो सकती है, सब एरेक्नॉइड हेमोरेज या फिर मेनिंजिम साइन. ओवर फ्यू मंथ्स there will be decrease in the CSF, arachnoid villi, absorption of urinary incontinence, dementia and bradyphrenia, that is slowing of the mental disorder.
gait abnormality similar to Parkinson's disease. इमेजिंग होगा तो हाइड्रोसेफेलस, वेंट्रिकोमेगाली आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू स्कल्कल एनलार्जमेंट. ठीक है. ट्रीटमेंट वीपी शंटिंग, 10% कॉम्प्लिकेशन, सीजर्स, इन्फेक्शन एंड इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज. ठीक है, दिस कैन हाँ करो. प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैरालिसिस और स्टील रिचर्डसन, इसमें पार्किंसोनिज्म प्लस सिंड्रोम्स होते हैं. So postural instability, falls, stiff broad base gait, impaired vertical gaze, difficulty in the reading, Parkinsonism, bradykinesia, cognitive impairment, primary frontal lobe dysfunction होता है, तो इसमें you will give L-DOPA. Now we come to Parkinsonism. Parkinson's disease diagnosis you do with iodine 123, fluorodeoxypy, CIT, SPECT जो भी है. मोर देन इक्वल टू 65 असिमेट्रिकल ट्रेमर होता है इसमें. ड्रग इंड्यूस्ड बायलैटरल, अच्छा ड्रग इंड्यूस्ड वाले में बायलैटरल होगा. नो रिजिडिटी, नो रेस्टिंग ट्रेमर. मोटर सिम्टम्स एज जनरेटेड रैपिड. न्यूरोपैथिक पेन जो है, जो भी है ट्रामाडोल देना है. Then intranuclear ophthalmoplegia, MLF controls the horizontal 3, 4 and 6 paramedian area of the midbrain and pons. Clinical feature, impaired adduction of the same side as the lesion. Horizontal nystagmus of the abducting eye on the contralateral side. Causes multiple sclerosis and vascular diseases. Migraine diagnostic criteria without aura, International Headache Society. A, more than or equal to 5 attacks for 4 to 72 hours. 2 of the following unilateral होना, pulsating, moderate or severe pain, aggravating by causing avoidance of routine physical activity, nausea, vomiting, photophobia, phonophobia, not attributed to any other disease. So if it is more than or equal to 5, then migraine is diagnosed. 25% will be migraine with aura. You don't need to do all this with that. NICE criteria. NICE criteria for diagnosing migraine, unilateral or bilateral. There will be aura with or without headache. It will be fully reversible. It develops at least 5 minutes, lasts for 5 to 6 minutes, 60 minutes. The patients with migraine experience delayed gastric emptying during acute attack. For this reason, analgesics are often combined. Prokinetic agents like metoclopramide is often given. Ocular migraine does not cause vision loss. Idiopathic intracranial hypertension. This is pseudotumor cerebri, benign intracranial hypertension. It is seen in young and overweight females. Obese female, pregnancy drugs like combined OC pills, vitamin A, steroids, tetracycline, lithium. All this should be given. All this should cause idiopathic. Clinical feature will be headache, blurred vision, papilledema, enlarged blind spot and 6-nerve palsy. Treatment, weight loss, diuretics like acetazolamide, repeated lumbar puncture. Topiramate will cause weight loss as well. Optic nerve sheath decompression and fenestration can be tried.